Hello dear students, today we are going to discuss exercise 2.5 from the chapter linear equations in one variable. This is from your NCERT book. So let us solve the questions. It says solve the following linear equations. So you have learned how to solve a linear equation. So we are going to apply that knowledge while solving these questions. So first one is x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. Yes, tell me how you are going to do this. क्या करेंगे इस सवाल को करने के लिए? Yes, we are going to transpose the terms. Okay, so we will be moving terms with the variable to one side and constant terms to the other side. Okay, if we bring x by 3 to the left hand side, we call this process as transpose. Okay, we transpose x by 3 to the left hand side. What do we get? X by 2 minus x by 3 equals, now we have to transpose minus 1 by 5 to the right hand side. So what do we get? 1 by 4 plus 1 by 5. So we change the sign of the term when we transpose it from one side to the other. So negative term becomes positive and the positive term becomes negative. Okay. Now we will simplify this. Now we see that we can take LCM here. So numerator will become 3x minus 2x. So this is equal to, here also you can take LCM and we get 5 plus 4 in the numerator. So this implies x upon 6 is equal to 9 upon 20. So what will be the value of x? Yes, x will be equal to 9 upon 20 into 6. Simplify this. Yes, we can cancel this. So what is the answer? Answer is 27 upon 10. So value of x for the first question is 27 upon 10. Let us do the second question now. Second question is, we have to solve n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equals 21. Yes, we are going to take LCM on the left hand side. We see that on the left hand side we have all the terms containing the variable n, and on the right hand side we have a constant term. Okay, what is the LCM of 2, 4 and 6? Yes, it is 12. So here in the numerator it will be 6n. 2 6s are 12. So 6 into n gives us 6n. Minus 4 3s are 12. So 3 into minus 3n gives us minus 9n. Then 6 2s are 12. So 2 into 5n gives us 10n. Simplify this. So 10 minus 9, that is 1, 6n plus n, that is 7n, upon 12 equals 21. So what will be the value of n? Yes, this implies n will be equal to 21 into 12 upon 7. Here you see this is 7 by 12. So 7 by 12 is multiplied by n. So when it goes to the right hand side, so it becomes 12 by 7, right? I hope you know this. So what is the answer? Yes, n comes out to be 36. Okay, let us do the third one now. Question 3 is, we have to solve x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2. चलिए बताइए, how will you do?
वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? हाँ, x यहाँ पर -8x/3 और राइट हैंड साइड में -5x/2. So you can bring all to one side. Okay. So x -8x/3. So when you transpose -5x/2 to the left hand side, it becomes +5x/2. So this is 17/6, and you transpose +7 to the other side, that is the right hand side, it becomes -7. Now again take the LCM. We take the LCM as 6 on the left hand side. So here we have 6x minus 3 2s are 6. So 2 8s are 16x. 2 3s are 6. So 3 5s are 15x. Equals, here also you take LCM as 6. So 17 minus 42. Clear? Okay, now you simplify this. What do you get? Yes, when we simplify this, so this is yes, this is plus sign. Okay, so -16 plus 15, it gives us -x. So 6x minus x, that is 5x upon 6 equals 17 minus 42 is -25. So we have -25/6. So this implies x is equal to -25/6. So 5/6, when it goes to the right hand side, it becomes 6/5. Simplify. What is the answer? Answer is x is equal to -5. I hope you have got this. Okay, now take question number 4. So question number 4 is, we have to solve x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5. Very simple. Try to do this. Yes, try to solve it yourself. Yes, we are going to do the cross multiplication. You are right. So what do you get? 5 into x minus 5 is equal to 3 into x minus 3. Simplify this. You apply the distributive law. We get 5x minus 25. भूलना नहीं है, ये 5 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 5 को -5 से भी मल्टीप्लाई करना है. दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, राइट? सो दिस इज 3x minus 9. 3 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया. अब 3x को लेफ्ट साइड में लेके आइए, इट बिकम्स -3x एंड -25 राइट साइड में जाके हो जाएगा +25. सो 5x minus 3x, 2x आ गया और -9 plus 25 16 हो गया. सो व्हाट विल बी x? 16/2. सिंप्लीफाई करो. बिल्कुल ठीक, आंसर आ गया. x इज इक्वल टू 8. फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है? x इज इक्वल टू 8. चलिए फिफ्थ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 दिया किताब में. हमें सिंप्लीफाई सॉल्व करनी है इक्वेशन 3t - 2 upon 4 माइनस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2t + 3 upon 3 इज इक्वल टू 2 upon 3 -t. लिख लो इसको, इम्पॉर्टेंट. क्यों मैं कह रही हूँ वो भी रीज़न बताती हूँ. यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन है ना बीच में, गड़बड़ करते हैं बच्चे सॉल्व करने वक्त, ध्यान रखना है, मैं भी सिखाती हूँ इसको. सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं. ऐसा भी कर सकते हैं कि -t हम लेफ्ट साइड में ले आए, बट चलो नहीं लाते, थोड़ा सा आपको 3 टर्म्स को कंबाइन करने में डिफ़िकल्ट लगेगा, तो पहले इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं. तो चलो 12 हमने एलसीएम लिया. सो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर? 3 × 3t - 2 माइनस, अब ये माइनस को ध्यान, जब भी माइनस साइन आएगा देन आगे आपने 4 × 2t + 3 ब्रैकेट ज़रूर लगानी है. सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन कंबाइन दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दीज टर्म्स लाइक 2/3 - t. इसको भी कंबाइन कर सकते हैं. सो लेट अस डू दिस.
3 LCM लिया, सो यहाँ पे आ गया 2 minus 3t. ओके, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट विल बी द न्यूमरेटर नाउ. सिंप्लीफाई करो. 90 minus 4, नो 3 into 2 is 6. देखो गलती हो सकती है ना, गलती नहीं करनी. 3 into 3t that is 90 minus 3 into 2 is 6 minus 4 into 2t is 80 and minus into plus is minus 4 into 3 is 12 divided by 12 is equal to 2 minus 3t upon 3. Let us simplify it further. 9t minus 8t, t आएगा, और माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 minus 3t upon 3. Now you see again we get this situation where we need to do the cross multiplication. So what will be the next step? Clear है. 3 into t minus 18 is equal to 12 into 2 minus 3t. Apply distributive law. 3 into t 3t, then 3 into minus 18 minus 54, 12 into 2 24, 12 into minus 3t minus 36 t. So this implies 3t. Now bring this minus 36t to the left hand side. What do you get? 3t plus 36t is equal to 24 plus 54. ये 78 हो गया और यहाँ पे ये 39 हो गया. So what is t? 78 upon 39. Answer is t is equal to 2. Easy? Yes, keep practicing. Okay, let us do now sixth one. Sixth भी question important है. Sixth is we have to solve m minus 1 by 2 equals 1 minus m minus 2 upon 3. देखो इसमें माइनस साइन है यहाँ पर और इधर भी माइनस साइन है, तो पहले ही यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि गलती ना हो. सो दिस इम्प्लाइज, आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों साइड्स को पहले सिंप्लीफाई कर लो. आई कैन टेक एलसीएम 2, सो हेयर आई गेट 2m माइनस m माइनस 1 इक्वल्स, यहाँ पे 3 एलसीएम ले सकते हैं, सो दिस इज 3 माइनस m माइनस 2. ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट नहीं दी होती और मैं इसको ऐसे ही m माइनस 1 लिख देती तो ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन आना है यहाँ, तो वो माइनस ही छूट जाता. ध्यान रखना है. सो 2m माइनस m, सो माइनस एंड माइनस ये प्लस 1 हो गया. 3 माइनस m, अब ये माइनस एंड माइनस प्लस 2 हो गया. सो 2m माइनस m प्लस 1 अपॉन 2 and here 3 plus 2 is 5 minus m upon 3. Now do cross multiplication. What do you get? 3 into m plus 1 is equal to 2 into 5 minus m. 3m plus 3, ध्यान रखना दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बार बार बोल रही हूँ इसे. 2 into 5 is 10 minus 2 into m. लिख रही हूँ आपके लिए ताकि याद रहे. 10 minus 2m. So 3m minus 3 is equal to 10 minus 2m. Now transpose the like terms to one side. So 3m plus 2m is equal to 10 minus 3. Simplify करो इसको. 5m is equal to 7. So what is the value of m? m is 7 upon 5. I hope it is clear to you. All questions are clear. Question number 1 to question number 6. In case you have any doubt or any query, you can write in the comment box.